बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ो नव branch of biology that's called as plant physiology. Plant physiology क्या गो? Plant physiology मज कम टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी हूँ कंसेप्ट क्या थोड़ा करो अत मुतलिक आज जान कोशिश। The word physiology has been derived from a Greek word physis. This physiology word is a Greek word मज द्रामुत Greek word physis, which in English means nature, and logos means discourse or study. That means plant physiology is that branch of science or biology which deals with the nature of plants. And in plant physiology paran how plant works or how different organs functions at cellular and biochemical level. Cellular level पैटर्न या molecular level पैटर्न या biochemical level पैटर्न कित पोट different organs function करान, कित पोट plant grow गसान, development plants गसान, and also respond to their environment. इन सारी चीज़ plant physiology मज। In short वनो plant physiology go, it is that branch of biology which constitutes sum total of all the metabolic activities taking place in plant body. यम metabolic activities गसान यम functions गसान plants मजन यम सारे study करने under branch of biology, that is plant physiology. In essence, plant physiology is the study of sum total of all the metabolic activities occurring in plants, like water relations, how plants absorb water, how plants absorb nutrients from the soil, and पथ water cell to cell movement हावान या short distance transport हावान या long distance transport हावान through xylem and phloem. अत पोत की कम function आसान, अत पोत क्या background यह plant physiology मज। That is water relations, आबस क्या relation plant सतन, आब कपोच प्लांट्स में अचान तो कमो जरिए प्लांट्स मजन आब नबर नेरान तो मिनरल न्यूट्रिशन ब्या प्रोसेस अंडर प्लांट फिजियोलॉजी, हाउ मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड हाउ मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द होल प्लांट बॉडी. दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस. एंड यु मिनरल्स तो वाटर अंडर प्लांट्स में अचान पत् करान different physiological processes like manufacturing of food through the process of photosynthesis. Photosynthesis तम पत् respiration te karan, wherein photosynthetic products are broken down to release carbon dioxide and energy in the form of adenosine triphosphate as ATP. And with the help of photosynthetic respiration, plants must development gasan, growth gasan, and plant also show different types of movements. Sorry, process under plant physiology. These sorry questions has one by one part in plant physiology मज़न. तो थोड़ा one by diagram मज़न plant physiology मज़न थोड़ा करो कुछ plant physiology मज़न.
अगर थोड़ा इतनी जानने की कोशिश करूँ, दिस इज़ द प्लांट बॉडी, तथ अंडरग्राउंड रूट सिस्टम। यमो रूटों किन कित पार्ट आब अचान प्लांट्स मजन, कम जरिए अचान, अत मज कस प्रोसेस गसान, डिफ्यूजन क्या गो, ऑस्मोसिस क्या गो, ती पान कत मजन प्लांट फिजियोलॉजी मजन। पत आब खसान फ्रॉम सेल टू सेल आब पकान, यह कित पार्ट पकान, एंड फ्रॉम रूट सिस्टम शूट सिस्टम यह आब पकान, that is represented through these arrows। यह कम जरिए पकान, अत पत्किन कस अख प्रेशर क्रिएट गसान, अत पत्किन कुस अख दैट इज जिस वन फोर्स अख आसान, इस फोर्स आब खालनावान फ्रॉम रूट सिस्टम टू शूट सिस्टम, और फ्रॉम रूट टू टॉप ऑफ द tall trees। लीव्स मज कुछ प्रेशर डेवलप गसान, कुछ फोर्स डेवलप गसान, यम जरिए बन आब खसान। तो लीव कित पार्ट हेकान फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनयित, ती परो सोरी इंशाल्लाह प्लांट फिजियोलॉजी मज। दैट मीन्स फ्रॉम रूट सिस्टम शूट सिस्टम, पत लीव्स मज, पत लीव्स मज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनान इन द फॉर्म ऑफ शुगर बनान, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च बनान, पत कित पार्ट गसान ट्रांसपोर्ट फ्रॉम source to sink, from the point where sugars, carbohydrates and food is prepared to the site where it is either consumed or it is either stored। Example is a plant body, and as you seen in this plant body, it's having root system and shoot system। Roots much बन कनत किवान yellow color spot that it is root, and when we cut transverse section of this root, which is important, this root is having outermost layer of cells in the form of epithelium, and some cells of epithelium they elongate to form unicellular root hairs, and root hairs much god aab asan, it's followed by cortex having number of cell layers, which is made up of parenchymal mass of cells, cell to cell movement of water gasan, watan kotan endodermis tamat, then ampat pericycles ma asan, ampat watan in case of roots you have a radial vascular bundle, that is xylem and phloem alternately asan, ampat xylem asan, xylem पर वातान फ्रॉम रूट xylem to shoot xylem, which continuous strand खसान as a continuous column of water, and ये कम जरिए पकान cell to cell water, तो पत कम जरिए पकान फ्रॉम रूट xylem to shoot xylem। that's also learned in plant physiology। this again a diagram which shows that is a root system, yamkin absorption of water and minerals gasan chu। This is soil particles, this water comes inside the root, then from root here cell it moves towards cortical region, there is the endodermis, is followed by pericycle then xylem and phloem, in this case xylem from root xylem to shoot xylem as a continuous stream, and it reaches over the tall heights and the leaves, wherein there is a large quantity of water, and again a concentration gradient is created between the leaf exterior and interior, and this excess water comes out in the form of vapors through the process of transpiration, that also comes under plant physiology। It has different processes from soil pattern, atmosphere tamat, atmosphere में भी soil tamat, यह continuous cycle kan, यह आब पकान plants मजन, यह कम जरिए पकान, minerals पकान कम जरिए पकान, सोरी पर plant physiology मजन। इंशाल्लाह अत मज गोडनिच process plant physiology मजन, that's called as diffusion, wherein molecules are
ions, they move from high concentration to low concentration through concentration gradient. That means iten zyada छ आसान इस पकान कोकुन iten कम छ आसान अत मज जरूरी concentration gradient create गसान and it is a passive process where there is no utilization of any type of energy. पच तब osmosis छ इतना पे facilitated diffusion osmosis different process one by one परो इंशाल्लाह सारी करो कोशिश कि इंशाल्लाह ये थोड़ा introduction about plant physiology. The father of plant physiology वन क्या लेखान Stephen Hales, father of plant physiology, who laid foundation stone for the study of biology. क्या वन Julius Sachs, father of plant physiology. तो क्या हमिस वन क्या वन वन कि अत मज फंक्शन डिफरेंट फंक्शन एट सेलुलर एंड बायोकेमिकल लेवल तुम जान कोशिश कर इंशाल्लाह आज गई हन बे इजाज़त बे खुदा सवाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।